line which is full of glamour and full of wrong notions about how one becomes an actress or an actor. So इन सब चीजों के बावजूद मैंने ये रास्ता इसलिए चुना और मैं इसलिए इसमें सफल हो पाई क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक ये बात किसी को बताई ही नहीं कि what I'm up to, what I'm doing in my life. That makes it little easier because then there is no one questioning you whether you're doing or not. And the reason I did engineering is because I wanted to fulfill what my mom dad wanted me to do. पहला ये आइडिया था कि जो मेरे माँ बाप चाहते हैं पहले वो कर लूं मैं, फिर अगर वक्त मिला या किस्मत ने साथ दिया या फिर तब इतना करेज अगर मुझ में रहा कि मैं नए सिरे से कुछ शुरू करूंगी तो मैं वो करूंगी. बट पहली प्रायोरिटी, मैं हमेशा अपने फैंस को भी यही बोलती हूँ कि हमेशा पहली प्रायोरिटी अपने मॉम डैड के ड्रीम्स को, उनकी चाहतों को दो, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन फॉलो व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो. Well, I came to Bombay under extremely unexpected scenario. मेरे घर में आग लग गई थी. I was staying in Indore. In Indore के जो फ्लैट में मेरे आग लग गई थी, तो suddenly I had nothing. Whatever I built from hosting events from Indore, I was doing shows, and whatever money, whatever collection of dresses, shoes, or whatever money that I made, it was all gone in the blink of an eye. And that was the time when I decided कि अब वक्त आ गया है कि ये शहर का जो भी शहर ने मुझे दिया, जो भी इंदौर ने मुझे दिया, उसको वापस करने का वक्त आ गया है. I cannot stay there anymore. एंड मुझे पता था कि मॉम डैड से मैं परमिशन तो किसी भी हालत में नहीं ले सकती, वो कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए बिना बताए. और मेरे पास एटीएम में पैसे भी नहीं थे एक्चुअली. मैं जब एटीएम में अपने कैश निकालने के लिए गई तो 1850 रुपए थे. उसमें से मैंने 1850 रुपए निकाले और 800 रुपए की मैंने बस की टिकट खरीदी. और एक हैंडबैग था जो कि मेरे पास बच गया था, वो जला नहीं था. वो हैंडबैग लेकर के और रिमेनिंग पैसे लेकर के मैं बॉम्बे आ गई. थैंकफुली जो मेरे एक्टिंग कोच थे वो बॉम्बे से थे. उनका एक छोटा सा घर है 1 BHK का, और उनके घर पे उनकी वाइफ ने मुझे बड़े अच्छे से रखा, बड़े प्यार से रखा. और 2 महीने उनके साथ रहने के बाद में जब एक आध इवेंट्स मैंने किए, 10-15 हजार कमाए, तब मैंने फिर बिना सोचे समझे कि आगे का रेंट मैं कैसे पे करूंगी, मैंने एक फ्लैट ले लिया. आई रिमेम्बर पहला फ्लैट जो था उसका रेंट था कमरे में बिस्तर शेयर करने का. मतलब there was one more girl which was sharing the same room and the same bed. बिस्तर का एक कोने का मैंने 12,000 रुपए दिया और वहां से शुरुआत हुई मेरी यारी रोड पे मैं रहा करती थी. तो वहां से शुरुआत हुई और रोज मैं बोरीवली में, जब मैं शुरुआत में भाभी के यहाँ रहती थी तो बोरीवली से अंधेरी तक आना होता था, जो कि 1.5 घंटे का रास्ता था. तो कभी ऑटो से, तो कभी ट्रेन से, तो कभी बाइक पे आया करती थी मैं अपने एक्टिंग वाले सर के साथ में. बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी. हर रोज आना और फिर रिजेक्ट हो जाना वॉज वेरी वेरी पेनफुल. बट कभी कभी कोई इवेंट्स मिल जाते थे तो बड़ा मजा आया करता था. लेकिन मैं ये बोलूंगी कि ऐसा एक भी पल नहीं रहा मेरी लाइफ का कि जब मैं ग्रेटफुल नहीं रही लाइफ के लिए. आज सब कुछ है तो मैं एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ बॉम्बे के लिए, भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए और अपने मॉम डैड के लिए. जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं इक्वली ही ग्रेटफुल थी. और ग्रेटिट्यूड इज एक्चुअली माई सक्सेस इफ आई हैव टू से. वैसे मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस को कोई भी चीज बीट नहीं कर सकती है. जब भी मैं स्टेज पर गई हूँ मुझे याद है आई यूज्ड टू ट्रम्बल. मतलब ऐसा लगता था कि वोल्केनो आ जाए, मुझे स्टेज पे ना जाना पड़े. एंड आई यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली नर्वस. But one tip that is it's like a hack, almost like a hack, is whenever you feel nervous, whenever you are about to go on a stage, just chew gum. जब भी आप च्युइंगम को च्यू करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो च्यू करने में बिजी हो जाता है और उसको लगता है कि यार आई एम ईटिंग, सो दैट मीन्स देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. तो आपके ब्रेन को उस तरह से रिवायर करते हैं. तो एक्चुअली वर्क्स, दिस टिप रियली वर्क्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गो प्रिपेयर्ड. जब भी आपके पास, क्योंकि शोज का ऐसा है कि कभी कभी शोज होते हैं, कभी नहीं होते हैं. राइट नाउ वी आर क्वारंटीन्ड. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिस. Practice hard, go in front of the mirror. Actually, don't go in front of the mirror because when you go in front of the mirror, you get conscious by your looks. So just practice speaking. Follow YouTube speakers. इतने सारे लोग हैं जो कि amazing speakers हैं. I used to follow Oprah Winfrey. I used to write what she is saying. मतलब वहाँ पे उनकी speech चल रही होती थी and I used to type and write. There are many speakers like Mel Robbins, Tony Robbins. There is Simon Sinek, जिनका की wit बहुत अच्छा है, बहुत ही precisely बात करते हैं. Then there is Jim Quick. Jim Quick tells about brain power and how can you actually learn quickly and how can you actually
be better in learning anything in the world. And he also teaches about how to read 24 books in 1 year. Matlab, that means 2 books a month or something. So follow these multi-talented people who can actually teach you, because the more you listen, the more you learn. And also watch English films as much as you can with subtitles on. And also I think the book is here. Let me just show you. Now this is the book that saved my life. It's Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. इसमें सारी वो चीजें हैं जो कि आपको जरूरी है on a dating life, for your dating life, for being a good friend, for having a lot of people around you. I have been a loner. मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो कि कैफे में अकेले बैठ के कॉफी पी के राइटिंग करती रहती थी और अपने प्लान्स लिखती रहती थी ऑन अ डेली बेसिस. मैंने ये 3 साल किया है लगातार. So, but I always wanted to have a lot of friends. I wanted to be charismatic. I wanted to be remembered for the way I speak and the whole personality I wanted to work upon. So I read this book. It's quite big because there are 2 books in it. You can always get this one as a PDF also right now. I would say I enjoy acting the most. Acting is my first love. It always will be. Second of all, what I love most is to inspire people. I always wanted to be like Oprah Winfrey. Before I wanted to become an actress, I wanted to be an inspiration. Someone who can change lives, someone who can inspire people to become the best version of themselves. So yes, in future, once I'm older and have white hair on me, I would like to inspire people. I will be on stage. So I'm always gonna be there after your life to be the best. The night when I got to know about that I am the most ruled woman in India. Oh my God. पता है ऐसी चीज है ना, आप चाहते हो कि आपके साथ हो, पर जब वो आपके साथ एक्चुअली में होती है ना, आपको यकीन नहीं होता. एंड यू डोंट एक्चुअली नो द राइट एक्सप्रेशन टू फील एंड द राइट एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस. सो गोइंग बैक टू दैट सेम मेमोरी व्हेन दैट हैपेंड, आई रिमेंबर आई वाज जस्ट लाइक राइट नाउ, या आई वाज नम. It took me a while to process the information, and then I told my manager, I told my couple of friends to cross check whether the information is right or not. And it's so funny how I got to know about this. Actually, one fan mailed me about making an app for me. Uska mail aaya ki I want to make Anveshi Jain app for you. Initially, we'll keep the app free and then we will make it paid and we'll generate massive revenue from the application. I said, okay, but then why do you want to work with me? I've done just 1 web series and nothing else. I'm so new in the business. He said, madam, because you are the most Googled actress in India right now. I said, what? Really? So imagine, coming from a fan is where I got to know about it first. And when I told my manager, he said, yes, that statistics is correct. And that's how the word was spread around. And the next day I know there was news about it that I am the most Googled actress after Sunny Leone. And people expected another hot woman coming after Sunny and all of that. So yeah, it felt surreal. It felt like a dream. And कई बार तो ऐसा होता था, मैंने हर बार बोला है कि जब बिग बॉस की बात चल रही थी तो उस टाइम पे आई वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. And to be trending on Twitter is a very, very, very big deal. That night, I was sleeping and just in the middle of the night, I got up and I cried. I've been feeling so overwhelmed कि मैं रोती थी उठ करके कि यार ये क्या हो गया. Oh my God, how blessed I am. So that's exactly how I'm feeling right now. How blessed. I absolutely loved it. But ऐसा होता है ना कई बार लाइफ में कि आपके पास एक बहुत ज्यादा खुशी वाला मोमेंट भी होता है और उतना ही नर्वस वाला मोमेंट भी होता है. बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ योरसेल्फ यू फील हैप्पी दैट यू आर एक्टिंग, यू आर फाइनली being on set as a lead actress for very famous web series. And when you think of your parents, when you think of what it is going to do to you once it is out, that's a feeling that you don't want to have. तो मेरे ख्याल से सर लाइफ में बहुत कम हुआ है मैंने दोनों चीजें एक साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील की हैं. शूटिंग फॉर नीता's character was that emotion for me, and I was so nervous and I was so excited that I used to tell director
at one point in time, okay, sir, please don't give my name. I do not want to be known as this character first. I don't want to begin my journey of acting with this. And on the other hand, I was super excited to play Neeta and being with, Flora, shooting with her, becoming friends to her, getting the whole set and makeup and all the attention that as an actor you get for the first time. And the small town that we shot in, everything was so surreal, so magnificent that I was loving the whole journey. To be honest, because it was my first shoot, behind the scenes all I was doing was I was sitting in the corner and I was trying my best to give my best. I was just trying to get the real emotions, real kiss, real cry, real everything. So it was a lot of background work that I was doing. I was not talking to people while I was shooting. I was sitting in a corner and just working on myself. It was such a magnificent journey. The moment I entered the industry, I became controversial. Although I don't think it's such a bad thing. Not that I enjoy attention. I am not one of those people who would want to be in controversy or will fire the things up. But one thing I learned very quickly is what's best for me is to be who I am. If I am known as a sex symbol, or if I am seen as a sexy woman or someone who owns a sexuality, well, that's who I am. That's who I've always been, with or without being famous, with or without playing Neeta, with or without kissing a woman on a screen. I've always been that person. But yes, for a while I thought I wanted to change my image for the fact that right after Gandi Baat, I had to reject close to 25 shows because they only wanted to see my body, or they wanted to see a lesbian scene, me kissing on a screen another woman, or having a makeout scene. Or majorly, the biggest one was they wanted me to wear bikini, do pool scenes, do bed scenes, and I said no. Because doing Gandi Baat was a very strategic move. बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये एक strategical plan था मेरा और मेरे mentor का, जिन्होंने मुझे ये बोला था कि अन्वेशी, swear upon God, after doing Gandi Baat, you are not going to do any similar kind of show which will slot you or make you a woman who is only known for sexy characters. I personally think, I read books, I have an understanding of human behavior because I am myself a human behavior analyst. I have done courses in psychology and human analysis, and I have a decent face, don't you think? So I don't really have to use my body or to get naked on a screen to become someone. I can be a complete package. A woman who can act, who can sing, who can speak, who can host, who can do a lot of things. So why to settle? Which is why, yes, it was extremely controversial, it still is, but then yes, something would come out of it every single